हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं एक नया वीडियो लेक्चर। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में कुछ बच्चों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे सोल्व करने की। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस था जो हमसे स्टूडेंट्स ने पूछा था बेटा, जिसमें वो पूछ रहे थे कि सर जो हमारे पास सेल होते हैं दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक हमारा जो सेल होता है बेटा दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जनरली वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप ही होता है बेटा। तो इसमें उनको कंफ्यूजन था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। इनको अच्छे से क्लैरिफाई करके समझने की कोशिश करते हैं। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो देखिए हम समझते हैं किस प्रकार से कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसके दो टाइप बनते हैं बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्या बनते हैं, दो टाइप होते हैं, जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो हमारा एक टाइप रहेगा और दूसरा सेल जो हमारा रहेगा दैट इज गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं बेटा, या जिसको वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं। ये हमारा इसका सेकंड टाइप होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो जनरल सा मीनिंग रहता बेटा वो हमारा बेटा फॉर्म्स के बारे में जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वी विल अपडेट यू सून। हम आपको जल्दी ही अपडेट कर देंगे इसके बारे में। तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उनको अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेटा उसी को हमें गैल्वेनिक सेल भी बोल देते हैं। ये सर टेस्ट सीरीज में कूपन कोड कौन सा यूज करना है बता दो। ओके बेटा, कूपन कोड के लिए जो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर हैं नर्सिंग एकेडमी के उन पे आप A1 नर्सिंग एकेडमी के उन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेटा। तो जिससे आपको ये एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन सा कूपन कोड है आपको यूज करना, क्योंकि हर एक बैचेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। तो आपने कौन सा बैच है वो तो उसके बेसिस पे आप ये मैच कर सकते हैं कि आपने कौन से बैच में इनरोल कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे आपको एक बेसिक सा फंडामेंटल डिफरेंस है बच्चों, वो याद रखना है। वो डिफरेंस क्या रहेगा बेटा, दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारा क्या होता है, कन्वर्जन होता है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यानी कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी बेटा। दिस इज ऑब्जर्व्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये हम किस में देखेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है, जबकि गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो वोल्टिक सेल में हमारा क्या होता है बेटा, हमारी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है कौन सी, यानी केमिकल एनर्जी। गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें हमारी जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रिकल से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोलाइटिक में पहले हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे बेटा, जिसकी वजह से हमारा केमिकल चेंज होगा। इज दैट क्लियर। जबकि गैल्वेनिक सेल में या वोल्टिक सेल में आपको इसका रिवर्स याद रखना बेटा, कि इसमें हमारा क्या होगा बेटा, जो गैल्वेनिक सेल में या वोल्टिक सेल में हमारी जो केमिकल एनर्जी है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी एनर्जी किसके अंदर किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाती है। तो गैल्वेनिक सेल में पहले केमिकल में एनर्जी है वो हमारी, गुड आफ्टरनून बच्चों, तो पहले हमारी क्या होगी, जो केमिकल एनर्जी है वो किस में चली जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एंड प्रोडक्ट, यानी कि
एंड में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारा पहले हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में, यानी कि एंड प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, केमिकल चेंज हमें दिखाई देगा बेटा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस आपको याद रखना है। एक तो ये डिफरेंस हो गया बेटा। अच्छा, अब जो बच्चों का क्वेश्चन था वो था कंफ्यूजन ऑफ ए साइन ऑफ ए एनोड एंड ए कैथोड, कि एनोड और कैथोड पे जो साइन होते हैं बेटा, उनमें उनका कंफ्यूजन था कि किस प्रकार से वो इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे अगर हम पहली बात तो ये याद रखेंगे बेटा कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, व्हाट इट मींस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो भी होता है बेटा, वी यूज ओनली वन कंटेनर, only one container in a electrolytic cell. In electrolytic cell we use only single container in which oxidation and reduction both reaction take place in a single container. So how can we take, we can take out a container in which we dip two electrode and they are connected externally with the battery, so we can supply the electricity. Okay, so this is the apparatus we are using. Okay, so here what we have, see here we will see that when the battery is connected externally and the terminal which is used in the battery which is larger in size, and you know very well in the sign convention of physics that terminal is taken as a positive, or you can say that terminal is counted as positive, that is connected with the electrode, and negative terminal connected with another electrode. The electrode which are connected with the positive plate of the battery, they are known as a, what is that, that is known as a anode. Remember this one, the positive charge of battery or positive plate of battery connected with those electrode, that is counted as a anode. One thing you should remember always, that at anode always oxidation take place, oxidation take place. What do you mean by oxidation? Oxidation means loss of electron. Okay, great, you get understand about it. Now we are discussing about what negative plate connected with those electrode, that is termed as cathode. Okay, and cathode, always remember this line, that maybe this is electrolytic cell or maybe electrochemical cell, or you can say galvanic cell. Cathode always represent the reduction reaction. So at cathode always reduction reaction take place. So remember this, cathode always shows the reduction reaction. So at cathode reduction will take place. Remember my words, at cathode always reduction take place, at anode always oxidation take place. Now if we are discussing about this operators, in this cell we contain only one container in which both the reactions, what is the reaction, this is oxidation, this is reduction. So oxidation and reduction, what it means, redox reaction. So in which redox reaction take place into the single container, that is known as electrolytic cell, and electrical energy getting changed into chemical energy. So that is called a electrolytic cell, and the process is known as a electrolysis. What do you mean by electrolysis? I already told you in multiple times that electrolysis means electrolysis. What it means? Electrolysis means breakdown of a chemical, of a chemical with the help of electricity.
that is called electrolysis. Okay, is that clear? Okay, we are moving towards the next one. So that is all about the electrolytic cell. So what we take in the container, we take the electrolyte. What will happen in electrolyte when electricity is supplied? The electrolyte dissociate into ions. This electrolyte gets dissociate into ions and conduct the electricity. Strong electrolyte conduct electricity completely because it gets completely ionized into the ions, and weak electrolytes conducts the electricity partially because it is partially dissociate into ions. So remember this also. Electrolyte, in case of strong electrolyte, we are discussing about that is a we can take NaCl, H2SO4, NaOH, KCl, KBr. These are come in the category of strong electrolyte. In case of weak electrolyte, we are discussing about acetic acid, sodium hydroxide, or you can say ammonium hydroxide. Sodium hydroxide is a strong electrolyte. Ammonium hydroxide, ammonium chloride, these are come into the category of a weak electrolyte. Now we are discussing about these, all about we have discussed with a strong electrolytic cell. ये प्रीतम बेटा, you want to take test series? Okay, don't want to buy batch. Okay, but according to test series, there are some promo codes also there. After class, we will discuss with you that what kind of promo code and what kind of key you need to be getting purchase the course. If you want to take the test series also only, so there is also a procedure. Then you have to follow that one, and you will get the test series from the A1 Nursing Academy app also. Okay, so now we are discussing about the galvanic cell. In galvanic cell, remember my word, you have to follow a word that is alone. Yes, this is very necessary for that is very necessary for learning the concept of chemistry also, and for a electrochemical cell also. What it means in alone: A for anode, L for left side, O for oxidation, N for negative, E for electrode. So, in case of while you are drawing or while you are discussing about galvanic cell or voltaic cell, you have to discuss about the alone. So, you have to recall that word, and you get understand that at a anode in a galvanic cell or a voltaic cell, we have negative charge. What is other difference from electrolytic cell? In electrochemical cell, we are using two separate container in which one is used for oxidation half cell reaction, another one is used for a reduction half cell reaction. So think about that one, we are drawing that one. So here we can take there is the two electrode. While we are connecting, we can connect with the potentiometer or voltmeter, or we can say simply connect with a bulb. So for internal connection, we can use a salt bridge. Salt bridge is used a device which is used to fill up the you can say substances which is inert. KCl, KBr, KNO3 are used in it, and these electrolyte are mixed with सर कोऑर्डिनेशन चैप्टर कब होगा? डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टॉट दैट चैप्टर इनटू द क्लास program, and online question series we will discuss that one also. In class program we have discussed and we have completed the coordination compound chapter completely with the agar solution. Agar is a jelly like solution which is used. So while we dip this
So always remember that in electrochemical cell or in case of a galvanic cell, we use two separate container and in which one in left side, remember your left hand side or your right hand side. In left side we use a anode and that is a negative terminal. In right side we use a cathode, that is a positive terminal. So in a electrochemical cell the sign convention getting completely changed. So you have to remember this one. Anode, you know very well, oxidation always take place, and in a cathode always a reduction take place. Is it clear? So that is the basic and main fundamental difference. We will discuss a electrochemical cell in detail in the next video lecture. Till that, always remember the concept completely and try to practice the MCQs. Thanks for watching the class. Thank you everyone for watching this and try to practice the questions. Okay, done.